So we were doing about seeds, fruits yesterday. बेटा मैंने आपको नए स्टूडेंट्स जो है वो भी कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने लेक्चर्स सब जो है हम ग्रुप्स पे भेज रहे हैं। तो ट्राई टू विजिट दोज लेक्चर्स, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कोई हमें कहीं भागना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो 15 अप्रैल से ही शुरू होते थे स्कूल। तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है, इतनी भागने की जरूरत नहीं है, हमें आराम से करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम, थोड़ा कष्ट रह गया अब तो। ठीक है जी। तो हमने yesterday I had told you about seeds. Seeds क्या चीज है? Seeds are the fertilized ovules, ठीक है। और मैंने आपको एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में बताया था। वही लिख लेना, जहां पे कल लिखा था वहीं पे लिख लेना कि एंडोस्पर्मिक सीड्स also called as albuminous seeds, non endospermic are also called as, you know, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको लिखवाई थी, बट एक बार देख लो, अगर कोई मिसिंग एग्जांपल है तो ये लिख लो, राइट डाउन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। जल्दी से, व्हीट, मेज, राइस, कैस्टर, बार्ले, सनफ्लावर, एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस में पी, बीन्स, ग्राउंडनट। पेरिस्पर्म मैंने आपको बताया था, पेरिस्पर्मिक सीड्स, कॉफी, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। आई थिंक यू मस्ट हैव डन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए ये नीचे, व्हाट अकर्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई बेटा, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है और उस मैम प्लीज फर्टिलाइजेशन, वेट, ऊपरला नहीं लिखा अभी तक। अभी ऊपर वाला लिखा नहीं है, लिख लो। ये बहुत सारी एग्जांपल्स आपने लिखी होंगी, मैंने इसलिए कर लिया था, लिख लो पहले। चलो, जब सीड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से जब सीड बनता है, ठीक है, तब क्या क्या चेंजेस आती है? इवेंट्स ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो चेंजेस इन द ओव्यूल, चेंजेस इन द ओव्यूल when it forms seed, changes in the ovule when it forms seeds। ठीक है, तो क्या चेंजेस है बेटा, ये देख लो। फर्स्ट है जो इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल दे बिकम हार्ड टू फॉर्म टफ प्रोटेक्टिव कोट्स, सीड कोट्स। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल becomes hard या gets hardened to form tough protective, आप यहाँ पे थोड़ा सा और लिख सकते हो, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। सेकेंड है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आपको पता है जहां पे ओव्यूल को इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करती है। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर which facilitates entry of oxygen and water into seed during seed germination. Micropyle remains as a small pore, सीड में छोटा सा पोर है, through which water and oxygen enters in the seed during seed germination. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, एज द सीड मेच्योर, जैसे मेच्योर होता है,
उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि वो ड्राई हो रहा है बेटा, मैक्सिमम सीड्स ड्राई है, वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम relatively dry. As the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry. कितना पानी रह जाता है? ड्राई सीड्स है 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, जितना भी सीड्स का मास है उसका बस 10 से 15% उसमें पानी रह जाता है, 10 to 15, अदरवाइज 70-80% पानी होता है बेटा हर चीज में, बट जब सीड ड्राई हो जाते हैं इट हैज ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। ठीक है, एंड देन द जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द एम्ब्रियो डिक्रीजेस, क्योंकि पानी ही नहीं रहा बेटा। ठीक है, आपको ये रीजन पूछना आ सकता है कि क्यों पहले आप ये लिख लो, द जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। बिकॉज, आंसर लिख लो, क्यों ये क्यों स्लो डाउन हो जाता है? बिकॉज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी जब कम हो गया, ड्यू टू डिहाइड्रेशन द एंजाइम गेट्स लेस एक्टिव, ड्यू टू डिहाइड्रेशन या लेस वाटर अवेलेबिलिटी द एंजाइम गेट्स लेस एक्टिव, और जब एंजाइम्स कम एक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली रिपीट due to dehydration or less availability of water, the enzyme become less active. ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट एक और लिख लीजिए, the embryo respires anaerobically, the embryo respires, ये एनर्जी ज्यादा चाहिए ही नहीं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो respires anaerobically। ठीक है जी, so this is about changes in the ovule during seed formation। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा सीड जर्मिनेशन, नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सीड जर्मिनेशन में पहला क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर that activates enzyme, that activates enzyme। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स increases metabolism, increases metabolism that requires energy, that requires energy। मैम रिपीट increase in metabolism, increase in metabolism requires energy। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि वाटर आ गया
एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए। थर्ड पॉइंट है जब एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ पॉइंट है मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। रिपीट थर्ड। बेटा मुझे इतना एकदम तो याद भी नहीं है क्या बोला था थर्ड। पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, थर्ड है इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और फिफ्थ आ जाएगा क्योंकि एनर्जी चाहिए तो फिफ्थ पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड सीड। जब डिफ्यूजन हो जाएगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चेंजेस टू aerobic respiration, secretion of gibberellins। ये मैंने कल आपसे पूछा भी था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर ठीक दिया था। which mobilize food, mobilize food मतलब breakdown of food, which mobilize food by, ये साइंटिफिक टर्म मैंने आपको बता दी कि ये क्या है, by activating enzyme alpha amylase, which activates enzyme alpha amylase। ये अल्फा amylase क्या करता है, it breaks starch into simple sugars, which breaks starch into simple sugars, which get used in respiration। कौन सी respiration, aerobic respiration to provide energy। to provide energy। नेक्स्ट आ जाता है बेटा respiration to provide energy। नेक्स्ट 8 पॉइंट है बेटा seed coats gets ruptured, seed coats टूटेंगे। 9th है radical comes out of seed first and establishes root। radical comes out of seed radical comes out of seed first। सबसे पहले रेडिकल बाहर आया सीड में से and establishes root। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है
plumule comes out of seed coat due to elongation of hypocotyle or epicotyle. Due to elongation of hypocotyle or epicotyle and forms shoot system. Shoot system means stem and leaves, and forms shoot system. Everybody done? Yes, ma'am. चलो कर लो चलें जी करें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, फर्स्ट आ जाता है हाइपोजियल और दूसरा आ जाता है एपीजियल। फर्स्ट है हाइपोजियल एंड सेकंड है एपीजियल। आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा ये सॉइल है सारी। हाइपोजियल जब कॉटिलिडन्स, हाइपो मतलब नीचे, when the cotyledons remain below the soil it is called as hypogeal. Epigeal when the cotyledons come above the ground, above the soil. Epi means ऊपर, when the cotyledons come above the soil it is called as epigeal. क्यों ऐसा क्यों, किसी में नीचे किसी में ऊपर, ऐसा क्यों बेटा? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, this is epicotyle and this is hypocotyle, and you can see here in this the epicotyle elongates. जब सिर्फ epicotyle बढ़ रहा है तो सिर्फ प्लूमूल बाहर आया, कॉटिलिडन्स अंदर ही रहे। और इन कंट्रास्ट यहाँ पे हाइपोकोटाइल elongate कर रहा है, जब ये करेगा तो ये कॉटिलिडन्स को बाहर लेके आएगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, किसी में हाइपोकोटाइल elongate कर रहा है किसी में एपिकोटाइल। तो बेटा एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स में सफिशिएंट एंडोस्पर्म है फॉर द ग्रो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट। वहां पे कॉटिलिडन्स को कुछ नहीं करना पड़ता, वो अंदर ही रह लेते हैं, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व फूड है। ठीक है, इसलिए इट अकर्स इन एंडोस्पर्मिक सीड। जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है बेटा, रिजर्व फूड है तो सही बट उनमें रिजर्व फूड क्या है, थोड़ा फूड है जो कंज्यूम हो गया। अब क्या करें, अब एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए क्या करें? तो हाइपोकोटाइल elongate हो जाता है, कॉटिलिडन्स बाहर आ गए एंड दे फॉर्म फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लीफ। बाहर आते सार आपने ना कभी छोटी क्लासेस में, मुझे बताना, छोटी क्लासेस में आई थिंक 5th या 6th में आपको टीचर ने कहा होगा कि जरूर एक प्रोजेक्ट दिया होगा कि राजमा या चने भिगो के लाओ और छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना के लाओ। Yes, किया आपने कि ma'am. नहीं, Yes, है ना, ma'am. कटोरियों में या गिलासों में किया था कि नहीं, है ना? Yes. और आपने उसमें देखा भी होगा कि 2 छोटे लीव्स बाहर आते हैं, कुछ टाइम बाद वो फिर खत्म हो जाते हैं। कभी ये ऑब्जर्व किया Yes, ma'am. है ना? तो वो छोटे जो लीव्स थे वो किससे बने थे? वो कॉटिलिडन्स, 2 ही होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते। उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, फिर बाकी के लीव्स जो है फिर बाद में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन कॉटिलिडन्स ने इसकी हेल्प की क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड नहीं है, तो ये कॉटिलिडन्स बाहर आए, इन्होंने लीव्स बनाए। जब तक बाकी के लीव्स नहीं बनते तब तक दे डू फोटोसिंथेसिस एंड परफॉर्म and provide food to the
एम्पियर। ठीक है, तो ये लिख लो, हाइपोजियल एंड एपिजियल, जल्दी से। लिख लिया बेटा? No, No, ma'am. ma'am. लिख लो, लिख लो। करें बेटा आगे? चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वायबिलिटी ऑफ सीड्स। हमने, अगर आपको Please याद हो, move to right hand side, please. Move हाँ, to right hand side. थोड़ा सा रह गया था। Diagram रह गई। चलो डायग्राम बनाओ फटाफट से। करें जी बेटा आगे? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वायबिलिटी ऑफ सीड्स। हमने जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने वायबिलिटी का मतलब बताया था। वायबिलिटी मतलब कितनी देर तक जिंदा है। ठीक है, पोलन की वायबिलिटी हमने की थी, इसी तरह सीड की वायबिलिटी होती है। तो व्हाट इज वायबिलिटी ऑफ द सीड? इट इज द ability of the seeds, ability of the seeds to germinate, ability of the seeds to germinate under favorable conditions. The duration for which different seeds remain viable differs. After their liberation from plants.
This period ranges from few hours, few days, few weeks, few months, or many years, or for many years. For example, seeds of Lupinus arcticus. Seeds of Lupinus arcticus remain viable even after 10,000 years. These are traced from, ये हमें कहाँ पे मिले? These are traced from आर्कटिक टुंड्रा, साउथ पोल वाली तरफ से हमें ये मिले, आर्कटिक टुंड्रा से हमें ये सीड्स मिले। और हमने जब इनकी डेटिंग की तो हमें पता चला कि ये 10,000 साल पुराने सीड्स है, बट जब उनको ग्रो किया सफिशिएंट, मतलब एनवायरमेंटल जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, दे वर एबल टू ग्रो, सो दे आर वायबल इवन आफ्टर 10,000 years. Then another is seeds of phoenix dactylifera, खजूर जिसको बोलते हैं, seeds of phoenix dactylifera, खजूर, date palm, remain viable for about 2,000 years. They remain viable for about 2,000 years. These were, इनके सीड जो है जिनकी हमने इतनी बड़ी वायबिलिटी देखी, these were traced near Dead Sea. Near Dead Sea. ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, कर लिया बेटा, ये सारा हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम एक टर्म आ जाती है बेटा, सीड जर्मेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड जर्मेंसी। वाइबल सीड्स है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवरेबल है, फिर भी सीड्स जर्मिनेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो डोरमेंसी, रेस्टिंग स्टेट में है। क्यों है? उसके कई रीजंस हैं, तो डेफिनेशन लिख लो। इट इज inability
of seeds to germinate. Inability of seeds to germinate. Inability of, एक और टर्म लिखो, viable seeds. Viable seeds to germinate even under most favorable conditions. रीजंस क्या है इसके? फर्स्ट आ जाता है बेटा, दैट इज आफ्टर राइपनिंग पीरियड. फर्स्ट आ जाता है आफ्टर राइपनिंग पीरियड. इसका क्या मतलब है? ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है बेटा. सुनो पहले ध्यान से. एट द टाइम ऑफ सीड शेडिंग, जब सीड्स प्लांट से अलग हुए. ये बेटा, ये प्लांट की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. एट द टाइम ऑफ सीड शेडिंग द embryo is still immature and seed will remain dormant till maturation of embryo. The seed will remain dormant till maturation of embryo. This period between seed shedding and maturity of embryo is called as after ripening period. And seeds will germinate when the embryo become mature. वो खुद ब खुद जर्मिनेट कर जाएगा जब एम्ब्रियो मैच्योर होगा. ठीक है, हमने कुछ नहीं करना इसके लिए. लिख लो फटाफट से. मैम फिर अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है फिर वो वायबल कैसे हुआ सीड? बेटा इमेच्योर है, मरा तो नहीं है ना. ठीक है, अगर तो एम्ब्रियो मर जाएगा तब हम कहेंगे कि जो सीड है वो नॉन वायबल हो गया. इट इज स्टिल लिविंग, सिर्फ उसको थोड़ी सी उसमें चीजें करनी है, थोड़ा सा मैच्योर होना है. ठीक है जी, करें आगे. रवनीत हो गया बेटा? यस मैम. प्रभजोत, हरमन? नो मैम. कर लो. हरमन इज देयर और नॉट? नवराज, बच्चे ना ढीले पड़ जाते हैं कि चलो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाना है हमें, हम लगाएं ना लगाएं. गलत है बेटे. जो लाइव क्लास में मजा है वो रिकॉर्डेड में सुनने में थोड़ी आ जाता है. करें आगे बेटा. रिपन?
Yes, ma'am. चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए बेटा। वेट मैम लास्ट हाँ लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर राइपनिंग पीरियड। ठीक है जी। सेकेंड आ जाता है बेटा, सेकेंड है हार्ड सीड कोट्स। नेक्स्ट इज हार्ड सीड कोट्स due to which they cannot absorb water। ठीक है, so they either pass through alimentary canal of birds or animals। बर्ड्स और एनिमल्स उनको खा लेते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में से ये सीड्स पास होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स act on them, makes the seed coat soft। फर्क कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ सीड कोट सॉफ्ट हुआ, डाइजेस्ट तो हुए ही नहीं। comes out with feces। एनिमल या बर्ड्स की जो फीसेस है उनके साथ FAECES या FECES एक ही बात है। comes out of feces, और फिर क्योंकि सीड कोट्स उनके सॉफ्ट हो गए या परमिएबल हो गए, देन सीड्स जर्मिनेट। ये मैंने सोल्यूशन बताया है कि कैसे ये डोरमेंसी खत्म होगी। ठीक है, एक तो पहला सोल्यूशन ये है, दे कैन ओवरकम दिस, और सेकंड है मैकेनिकली such seeds are either boiled or pressed to overcome dormancy। इन प्रोसेसेस से भी, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है। ईदर के बाद क्या लिखा मैम? either boiled or pressed। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड रीजन आ जाइए। presence of inhibitors such as ABA, ferulic acid, phenols, etc., which do not allow growth of embryo। which do not allow growth of the embryo। ठीक है, this can be overcome
फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइनेस बाय एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने खुद ही सिक्रीट किया, एम्ब्रियो सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइनेस बाय एम्ब्रियो which antagonizes, मतलब रिवर्स कर देता है, antagonizes the effect of ABA, antagonizes the effect of ABA। और सेकंड आ जाता है बेटा when rain comes, ferulic acid and phenols leaches down, leaches down means पानी के साथ डिसॉल्व होके वो नीचे चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, एंड द सीड्स दे germinate। So these are the methods by which dormancy occurs and the dormancy is overcome। Ma'am, please move to right hand side. Method. The second point. Is it okay? Please speak mechanically. ये मैकेनिकल है और ये नेचुरल है। मैकेनिकली such seeds are either boiled or pressed to overcome dormancy। When rains come, when rain comes, ferulic FE, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, FERULIC, ferulic acid and phenols present in the seeds leaches down। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हो गया बेटा, डन? yes ma'am, Yes, ma'am. yes ma'am, ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, व्हाट आर द, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द adaptive strategies, what are the adaptive strategies of gymnosperms and angiosperms that leads to formation of seeds, that leads to the ma'am, formation. please repeat. What are the adaptive strategies in gymnosperms and angiosperms that found seeds? और दूसरा इसके व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, सेकंड इसी को ही क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, Speak leads to the formation of सीड। नेक्स्ट इसी का ही दूसरी फॉर्म में हो सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन, हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, वैसे जिम्नोस्पर्म्स भी आप लिख सकते हो, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी, तो आंसर लिख लो इसका। फर्स्ट पॉइंट है इन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स pollination and fertilization, in gymnosperms and angiosperms pollination and fertilization is independent of water, is advantages of seed formation in
in gymnosperms and angiosperms. In gymnosperms and angiosperms जो है इसमें हम बता रहे हैं कि in these plants pollination and fertilization are independent of water. Are Independent of water, पानी से independent है. And thus the process of seed formation is more dependable. ये NCERT की लैंग्वेज है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको. Process of seed formation is more dependable. क्योंकि बेटा इसको पानी नहीं चाहिए, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, तो पानी Is more रेनफॉल हो या ना हो सीड बन जाते हैं. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फॉर्म सीड्स. ठीक है, देयरफॉर सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. In the seeds, the embryo is protected by. In the seeds, the embryo is protected by the seed coats. In the seed, In the seeds, the embryo is protected by the seed coats. And the seeds will not germinate. And seeds will not germinate until favorable conditions are unavailable. Until favorable conditions are available. I'm sorry. ठीक है, इसलिए आराम से एम्ब्रियो के अंदर बैठा रहता है. conditions are Until environmental conditions are favorable. नेक्स्ट आ जाता है बेटा. Different seeds have different dispersal mechanisms. Different seeds have dispersal mechanisms due to which repeat. different seeds have different dispersal mechanism. कोई पानी से डिस्पर्स हो रहा है, कोई एयर से, कोई इंसेक्ट से, कोई एनिमल से, या कोई ब्लास्ट होके खुद ही डिस्पर्स हो रहा है. Different dispersal mechanisms due to which they can colonize. Due to which angiosperms can colonize. Due to which angiosperms can colonize different regions. Seeds उड़ के जानवरों के थ्रू कहीं कहीं पहुंच जाते हैं. Different regions. Ma'am, please repeat the point. Different seeds and different dispersal mechanisms. Different seeds have different dispersal mechanisms due to which the angiosperms can colonize different regions या different habitats, different regions आप कह लीजिए ज्यादा ठीक है. नेक्स्ट है seeds have sufficient food reserve. Seeds have sufficient food reserve for the young seedlings. Repeat. Seeds have sufficient food reserve for the young seedlings till they start Food reserve for the young seedlings
till they start photosynthesis. Till they start photosynthesis. And the last most important point, seeds are the result of sexual reproduction. Seeds are the result of sexual reproduction which introduce variations in the new generations. Ma'am, please repeat last second point. Last second point था, the seeds have sufficient food reserve for the young seedling till they start their own photosynthesis. Till they Seeds start, are the result of. एक मिनट बेटा, till they start their own photosynthesis. Next, Repeat. seeds are the result of sexual reproduction which induces variations in next generations. ठीक है बेटा, चलिए अब कल हमने थोड़ा सा फ्रूट के बारे में किया था, आज मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। फ्रूट जो है, इट इज द ripe ovary. It is also called as pericarp. मैंने आपको बताया था, it is fertilized ovary or fruit, or it can be parthenocarpic. Parthenocarpic fruit, for example, natural parthenocarpy in banana. बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, इन ग्रेप्स, पपाया एक्सेट्रा। औरों में भी होगी बट ये कॉमन हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी। सेकेंड क्लासिफिकेशन एक और आ जाती है फ्रूट्स की, आपने शायद +1 में भी किया होगा, दैट इज यूकार्प एंड स्यूडोकार्प। यूकार्प का मतलब है ट्रू फ्रूट, एंड व्हाट इज ट्रू फ्रूट? Which develops only from ovary part of flower. Which develops only from ovary part of the flower. For example, mango. This is a eucarp. Whereas pseudocarp means in which ovary is associated with other parts of plant.
फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इसका आ जाता है एप्पल एंड पियर। ये देखो, ये होता है थैलेमस, जिसपे वेरियस फ्लोरल ऑर्गन्स देख लो, बट इन सम केसेस What is this? मैं अभी बताती हूँ। थैलेमस आपको पता है, थैलेमस इज द फ्लोरल स्टॉक Yes. on which floral organs are born। इस तरह से ये थैलेमस है। और कई बार क्या होता है मैम बेटा, pseudocarp, हाँ जी बेटा, मैम what is written there after associated with? associated with other parts of the flower। Is it okay? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा कि the thalamus is cup shaped and ovary wall is, Please repeat. the thalamus is cup shaped and the ovary wall is fused with thalamus। In apple and pear, the thalamus becomes fleshy। In apple and pear, the thalamus मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो सारा। in apple and pear, the thalamus becomes thick। ये जो thalamus है, it becomes thick and fleshy। The ovary is reduced and corky। The ovary is reduced and corky। Reduced and Corky, C-O-R-K-Y। Fleshy. Corky, because ovary becomes reduced and corky, the thalamus becomes fleshy। Thalamus is edible। And this is corky ovary। तो ये फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि ओवरी के साथ क्या एसोसिएटेड है? थैलेमस एसोसिएट हो गया है। थैलेमस ने ओवरी को सारा कवर कर लिया है। इट इज ए फॉल्स फ्रूट। और जो हम एप्पल में खाते हैं, ठीक है, रिमेंबर, जो हम एप्पल में, सेब में अगर हम जो खाते हैं, जो पियर में, नाशपाती में हम खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं? वो हम थैलेमस खा रहे हैं। जो फ्रूट एक्चुअल में जो ओवरी है वो कहाँ है? जो सेंटर में कॉर्की सा स्ट्रक्चर होता है, वुडी सा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअल में ओवरी है जो हम बाहर फेंक देते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज ए स्यूडोकार्प। ठीक है जी। तो आपके +2 में, +1 में आपने जरूर फ्रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है, और +2 में सिर्फ इतना ही है फ्रूट्स के बारे में, ज्यादा है नहीं डिटेल, है ना। +1 में आपने कर ली होगी, इसलिए आई वोंट टच इट। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट फ्रूट, दिस इज अबाउट सीड। ठीक है जी। तो आज हम यहीं खत्म करते हैं, और अब हमारा सिर्फ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी रह गया है। ठीक है बेटा, आज का दिन, क्योंकि कल अष्टमी है, शायद कुछ क्लासेस का आगे पीछे हो, सबने अपने घर में पूजा करनी होगी, आपने भी करनी होगी, बाकी टीचर्स ने भी करनी होगी, इसलिए शाम का शेड्यूल देखते रखें, है ना। तो हो सकता है क्लासेस ऊपर नीचे हो, टाइमिंग्स चेंज हो, इसलिए 9, 9:30 बजे वी विल पोस्ट द टाइमिंग्स। जो ग्रुप्स में नहीं है बच्चे वो बताएं, ग्रुप्स में उनको ऐड करेंगे, नहीं तो अपने फ्रेंड से पूछ लें, दैट इज देयर वे। ठीक है,
तो वी विल डू दैट। ठीक है, तो हम टाइमिंग चेंज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देख। ठीक है जी, थैंक यू We are वेरी मच। drawing diagram. Please wait. ड्रॉ करना है, कर लो, और जिसको डाउट्स रह गए हैं वो रहो, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू बेटा। मैम इन ट्रू फ्रूट राइट हैंड साइड वाली